Welcome back to Yoga Volunteers program today. Okay, so let's begin with the asanas, the concept of the asanas. Uh, so, having completed all the preparatory warm-ups, I will share the screen to you first of all. The syllabus screen I will share. Okay, I hope my screen is visible to you. So the theory, the first unit has been completed. Okay, the practicals, the concept recitation of the hymns or the prayers, the cleansing practices, Neti, Trataka, Kapalabhati, the Kriya, loosening practices of the neck movement, shoulder movement, भुजावली शक्ति विकास का अच्छा ये लूजिंग ये हुआ है टेक्निक्स इवनिंग क्लास में ये हुआ है नहीं हुआ है No, ma'am. नहीं हुआ ना No, ma'am. ओके No. ठीक है I will take the techniques contraindications and benefits of the neck movement, which is Griva Shakti Vikasaka 1, 2, 3, and 4. Shoulder movement, Bhujavali Shakti Vikasaka, Purna Bhuja Shakti Vikasaka. Trunk movement, Kati Shakti Vikasaka 1, 2, 3, 4, and 5. And the knee movement, Janu Shakti Vikasaka. Okay. अच्छा अगर हम जब एंड करेंगे ना लाइक व्हेन नेवर देयर विल बी एंड ऑफ दिस कोर्स सो आपके जो ये कुछ गाइडेड जनरल गाइडलाइंस फॉर योगा प्रैक्टिसेस है या योगा प्रैक्टिसेस फॉर हेल्थ एंड वेलनेस है ठीक है आई विल टेक one class of it as a particular class which is going to be just I will be ending it with these topics in the last on the very last day ठीक है Okay, so I'll stop my screen sharing. So I have referred few of the books for you to show it to you certain images of all of these movements. ठीक है अच्छा तो सबसे पहले जैसे आपने एक नेक मूवमेंट देखा ठीक है नेक मूवमेंट को हम और क्या बोलते हैं नेक मूवमेंट को ग्रीवा बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकास का अब ये वाई डू वी कॉल इट एज ग्रीवा शक्ति विकास का क्योंकि ये जो प्रिपरेटरी मूवमेंट्स हैं ये एक सूक्ष्म व्यायाम है जिससे आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं ठीक है आप अपने आप को एनर्जाइज करते हैं ठीक है The various important things to consider before starting any Sukshma Vyayam is, first of all, you join the hands together to be in a state where you are equipoised, okay? In a state where you are attaining the balance. So with this particular, holding the hands together like this and holding the hands like this, so in Samasthiti or in the prayer pose, that way you get started and any of the uh, Sukshma Vyayam that you begin, whether it is of eyes, whether it is of neck, anyone. So any of the ligaments you start with. So this has to be always started with a kind of this Pranam Mudra. Okay. So that is very important to start with. Okay. So if I talk about the Griva Shakti Vikasaka 1, okay? Griva Shakti Vikasaka 1 pe, I am just sharing my screen to you everyone. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. Okay.
So having the Sukshma Vyayam or the Griva Shakti Vikasaka 1, you first begin with having your posture to have the feet together on the mat. अपने दोनों पैरों को, अपने feet को एक साथ रखते हैं and stand straightened, okay, with your palms by the sides like this. And you have to relax your neck at first and then turn your head without. So it is written as with a jerk. If you give a jerk, that is something else. So you turn your neck without giving any jerk, but very slower in the steady movement. So towards the right shoulder and then towards the left shoulder. Okay. So पहले right तरफ and then switching to the left. तो इस तरह से constantly अगर आप 10 times इसको begin कर सकते हैं. So that is exercise A. Then starting with exercise B, which is in a variation. Now again, having stood completely straightened, standing straightened, then you take a bend forward of your head so that your chin or your chin is touching the notch of your neck. And when you stretch your head at the back, जब आप अपनी गर्दन को, अपनी नेक को पीछे की ओर लेके जाते हैं, तो आपकी गर्दन पे एक स्ट्रेच आता है. ठीक है. तो इस तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट रखना है. एंड अगेन इट कैन बी 10 times. The breathing should be normal and you have to make a very steady and a slower stretching, ठीक है, of your neck. So simply अगर आप awareness without awareness देखेंगे तो then it will not give you the benefits. With the awareness, if you just keep the other your hands completely to the sides so that you're not being having any awareness on the other way, that how you are sitting, whether you are balanced or not, any sort of discomfortability should not be there. Only the movement of the neck should be focused. Okay. Then is Yoga Sukshma Vyayam Griva Shakti Vikasaka 2. So this is the second movement. Now in the second movement, it is again also simple. What do you see? Keep your feet both the keep your back completely straightened. Now, whatever the breathing you are doing is not from the mouth but from the nose. So having your eyes wide open, you can have your eyes completely widened so that you are telling yourself that you are able to focus. Okay. Now trying to rotate your neck, अपने neck को rotate करना है जिससे कि आपका chin जो है ऊपर की side पे होगा. ठीक है. Your chin towards the upper side. So rotate your head from the left to right and then right to left alternatively. Again breathing कैसी होगी? Normally. I think सभी ने ये neck movement, neck rotations, ये सब ही आपने अपने अगर कभी भी कोई सेल्फ प्रैक्टिस लिया होगा या कभी भी कोई योगा सेशंस लिए होंगे, आपने ये प्रैक्टिसेस जरूर देखी होंगी और प्रैक्टिस की होंगी. और कहा जाता है कि आपके जॉइंट रोटेशंस या जॉइंट मूवमेंट्स की तरह से पहले बिगिन करते हैं सेशन एंड देन यू स्टार्ट विद दी आसनास. So all of these practices are really important so that with the awareness you're able to keep yourself prepared for the asanas, and it is giving you it is energizing you in a very short span of time. ठीक है. Now try to make your ear touch your shoulder. अब आप क्या देखेंगे कि आपका जो ईयर है, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं like rotating, तो जब आपका इस तरफ में like towards the right side, because it is a rotation which is happening completely, you are rotating it from right to left and left to right. So at the time when you are reaching it to one of the side, whether it's right or left, so your ear should touch your shoulder. Okay. But whenever you are rotating, avoid lifting your shoulders because it is only and only the movement of the neck. Okay. Now the next is Yoga Sukshma Vyayam Griva Shakti Vikasaka 3. So this is again a neck movement, which is the third neck movement. So this is the third variation. Which was the first variation? The first variation was right to left, left to right, up and down. Okay. The second was rotating clockwise and anti-clockwise, right? The third one is, this is having straightened, having again you stand really straight, and with that you keep your feet
closer together. Okay. Now inhale and exhale through the nose. Again, you have to inhale and exhale through the nose, but your inhalation is in such a way that you are exhaling 25 times with the exhalation. So blowing out through the stomach. You blow out your stomach while inhaling because it is getting the abdominal breathing. तो आप स्टमक से ब्रीदिंग लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो आपका स्टमक पे इफेक्ट आता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द बेलोज इफेक्ट इवन इफ यू आर इनहेलिंग फ्रॉम द नोज. तो बेलोज इफेक्ट में क्या होगा, आपके स्टमक यू आर ब्लोइंग योर स्टमक. ब्लोइंग मीन बलून की तरह स्टमक हो जाता है जब आप इनहेल करते हैं. ठीक है. एंड ड्रॉइंग इट व्हाइल एक्सेलिंग 25 टाइम्स टू बिगिन विद. और जैसे ही आप एक्सेल करते हैं तो आपका एक्सेलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है. ठीक है. दिस ट्रिपल एक्सरसाइज, ये ट्रिपल एक्सरसाइज कैसे है, क्योंकि आप में जब आप इनहेल कर रहे हैं और आप एक्सेल कर रहे हैं, it gives a it gives your nasal passages some work that you are able to breathe more and more than the usual breathing. ठीक है. इस पर्टिकुलर थिंग से क्या होगा, आपकी नेक पे definitely it strengthens your neck because you are constantly standing straight and just looking forward without moving your neck and just breathing and having all the attention towards your neck. So what happens, this is a way that you are strengthening it, your neck. Then with the breathing, any peculiar diseases related to throat, okay, anything which is affecting your larynx or pharynx, it is a tract. So that is that tract, any particular thing. There could be some people who get the infections very easily. कई बार food poisoning हो जाती है. It can affect that as well. So that can be checked very easily and it helps a lot if you are doing the practice. इफ यू टॉक अबाउट द वॉइस, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स यहीं पे ही हैं. हमारे वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो बहुत रेजोनेंट हो जाते हैं. स्पीच डिफेक्ट्स अगर होते हैं लाइक लिस्पिंग और स्टैमरिंग, ठीक है, स्टैमरिंग होता है या लिस्पिंग होता है, कुछ वर्ड्स बीच में रह जाते हैं या कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं कि यू आर यू नो देयर इज सम काइंड ऑफ अ डिफॉर्मिटीज इन द स्पीच, so that is the lisping. So that gets completely removed because you have worked as a way, this works as a way, and this breathing works as a way that it works on your vocal cords as well, right? Now with perseverance, this exercise in conjunction with a couple of others yields marvelous results in the case of dumbness as well. So anything which you feel that you find yourself that you are not able to move your head out. कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे आप देखेंगे कि अटेंशन स्पैन बहुत कम है. अटेंशन स्पैन कम करने के लिए क्या होगा, आपका जब नेक पे आपका फोकस रहेगा तो आप कंप्लीटली एक तरफ देखेंगे. आपकी ब्रीदिंग के थ्रू रेगुलरली, दैट हैज टू बी सीन विद कंसिस्टेंसी. सो व्हाट हैपेंस, जब आप ऐसा देखेंगे कि यू आर एबल टू हैव द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग दिस प्रिपरेटरी मूवमेंट, तो इससे बहुत से हेल्प होती हैं लोगों को कि दे विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट वेल. ठीक है. स्पेशली सिंगर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, सिंगर्स को भी बेनिफिट मिलता है इससे. ठीक है. सो आई हैव कंप्लीटेड विद द नेक मूवमेंट. एनी क्वेश्चंस, एनीवन, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? Shall I take this topic ahead? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's see the shoulder movements. तो योगा सूक्ष्म व्यायाम स्कंधा और द बाहुमूला शक्ति विकास का शोल्डर मूवमेंट. ठीक है. शोल्डर मूवमेंट में the which is the next one, the shoulder movement, you can see it here. The shoulder movement में we are seeing the skandha. Greeva is the neck, skandha is the shoulder. So विकासका क्यों कहते हैं, शक्ति विकासका? It is energizing your certain areas, energizing and vikasaka because you are having for it to have the strength. Strength से क्या होगा, जो आपकी जितने भी deformities नहीं कहेंगे, deformities is used for the different context, but we will say that any sort of stiffness, any sort of
tension at the muscles, that gets removed. Okay. All right. So having the feet close together, your back straight, having the back completely straight, fingers clenched into the fists with having the thumbs in, and take your fists like this. Now, how you have to take your mouth? Pouting like a crow's beak. And then you are taking the air in, taking the cheeks out, and hold your breath. And the chin resting on that external notch. जैसे ही आपने inhale किया, एक pouting sort of में अपनी crow's beak की तरह shape किया, inhale करते हुए, your cheek should be like bloated, जैसे आपने ज्यादा से ज्यादा air लिया. So इससे क्या है, आप बहुत ही filtered way में air ले रहे हैं. फिल्टर्ड वे में एयर को ज्यादा से ज्यादा लेते हैं और अपने माउथ में रखते हैं. एंड देन यू टेक योर चिन लाइक दिस. ठीक है, चिन अपना यहाँ पे लगाते हैं नीचे की ओर, एंड वाइल होल्डिंग योर बैक स्ट्रेट मूव द शोल्डर्स वेरी कंटिन्यूसली एंड स्टिफली अप एंड डाउन. तो ऐसे अपना शोल्डर्स जो, जब आपका ऐसे हेड है इस तरीके से, यू मूव द शोल्डर्स अप एंड डाउन. ओके, इन अ पंपिंग मोशन. The arms should be kept rigidly straight at the side. Arms में कोई movement नहीं, fists रहेंगे, and you can see it in the image कि किस तरीके से arms बाहर की ओर में है. It's not like this in the front, it is like this. Okay, and similarly you can see the raised up shoulders here as one of the movement. Okay, so the pumping of the shoulders, taking the chin like at the notch of your neck, and then having a beak's mouth, having the air in, trying to have the air taken very slowly, and then filling your cheeks with the air so that your cheeks become like this. Okay, and then have it like this. So once you are having done with this movement up and down, okay, you take your shoulders up and down, what will happen? You have to come to the normal posture. So for that, you straighten your neck very slowly. You open your eyes. You can close your eyes at this time. When you take your neck up to the normal way, you open your eyes and gradually exhale from the nose. Okay. Now repeat the process 5 times to begin with. In this way, you can begin with 5 times. It works on the bones, blood vessels, muscles, nerves in the shoulders, and that get toned up. So when you work on your shoulders, the shoulders get bettered, it gets toned up. The muscles, which is at the face muscles, that gets bettered. The bones, that gets bettered. Okay, the bones of the face, facial bones. Okay, so muscles कौन सी? The neck muscles, the back muscles, right? Now let us see yoga Sukshma Vyayam Bhuja. Okay, this is the arm. ठीक है, आपका जो शोल्डर मूवमेंट है उसका ये है. भुजावली शक्ति विकास का इज द थर्ड वन. ठीक है, भुजावली शक्ति. विल सी. सबसे पहले आप अपर आर्म का देखेंगे. व्हाट इज द अपर आर्म? सो योगा सूक्ष्म व्यायाम भुजा बंधा शक्ति विकास का, विच इज द अपर आर्म. ठीक है, अब इसमें क्या है, आप इस इमेज में देख सकते हैं ये कैसे है. ठीक है, ये एंगल कैसे बन रहा है आर्म्स का? 90 डिग्रीज. ठीक है, ये दोनों आपके जो अपर आर्म, ये हो गया फोर आर्म. तो ये फोर आर्म जो है ये पैरेलल है आपके फ्लोर पे, इस तरीके से एंगल बनाया है. ठीक है, अब ये पैरेलल है. फीट कैसे होंगे? फीट क्लोजर टुगेदर, योर हैंड्स फॉर्म्ड इनटू fists with the thumb inside, tucked inside, and rest of the fingers clenching it. So having the clenched fists. अब क्या है, आपकी जो एल्बोज हैं बेंड हैं. Raise the forearms at the angle of 90 degrees. ठीक है, like this. Now exercise क्या है? जब आपने positioning पहले देख ली, position के बाद में exercise है throw your arms vigorously forward and backward at the shoulder level. ठीक है, अपने आर्म्स को शोल्डर लेवल पे थ्रो करना है. अगर ऐसे आर्म्स हैं तो इट्स लाइक दिस. ओके, एंड ध्यान रखना है कि एल्बोज पीछे की ओर नहीं जाएंगे, आपके एल्बोज स्टिक रहेंगे. इट इज जस्ट दैट यू आर मेकिंग द मूवमेंट ऑफ योर आर्म्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ठीक है, द एल्बोज मस्ट नॉट गो फर्दर बैक देन द स्टार्टिंग पोजिशन. तो आपने एंगल यही मेंटेन करना है
और इस तरीके से जो आपके हैंड्स हैं, हैंड्स ऊपर और इस तरह से फॉरवर्ड एंड बैक, फॉरवर्ड एंड बैक ऐसे रहेंगे, ठीक है। नाउ हैविंग दैट, when push the arms should be, when you're pushing the arms should be parallel to the ground. आप arms अपने ग्राउंड के पैरेलल रखेंगे. पुशिंग द आर्म्स मीन्स जिस तरीके से नॉर्मल स्टेट में योर आर्म्स आर कंप्लीटली पैरेलल टू द ग्राउंड, ये पैरेलल ही हुए ना ग्राउंड के, तो ऐसे ही वापस से पैरेलल रखना है. एंड ब्रीद नॉर्मली अगेन फ्रॉम द नोज. So the breathing happens, in breathing 25 times the arms which are underdeveloped with weak biceps will develop the good muscles. इसमें बेनिफिट क्या है कि जितने भी आर्म्स, फोर आर्म्स, अपर आर्म्स है, ठीक है, स्पेशली ये अपर आर्म्स के लिए है, क्योंकि नाउ सिंस यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर फिस्ट एंड योर फोर आर्म, so it will work on the muscles of the upper arms, ठीक है. तभी इसका जो ये है, it is called as the for the upper arms, ठीक है. भुजा बंधा शक्ति विकास का. So it is good to develop the muscles. If anybody has a weak biceps, it gets developed if it is undeveloped. Okay. Heavy arms will become slender. जिनके बहुत heavy arms होते हैं, तो या फिर जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जो आर्म्स में है, आर्म्स प्रॉपर टोन्ड अप नहीं है, तो वो बेटर होने लग जाते हैं, ठीक है. एल्बो जॉइंट्स हैं, दैट विल रिसीव अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ. एल्बो के जॉइंट्स में अलग से ही स्ट्रेंथ आपको दिखेंगी. एनी डिफॉर्मिटीज ऑफ द आर्म्स एंड द शोल्डर्स विल बी क्योर्ड. क्योंकि आर्म्स और शोल्डर्स में कोई भी डिफॉर्मिटी लगती है कि यू नो यू आर प्रोबेबली फाइंडिंग कि आपको ऐसा लगता है कि कंधा जो है उसमें कुछ अलग सा पेन होता है, लगता है कि एल्बोज, यू नो यू आर नॉट एबल टू मूव योर एल्बो, या आप हैंड बिल्कुल है अपना स्ट्रेटन नहीं कर पा रहे हो. सो इस तरीके से अगर कुछ भी डिफॉर्मिटीज होती हैं, it will be bettered, it will be it will give strength to your elbows and the joints. Consistent practice of this exercise will make the arms look like an elephant's trunk and will be as strong. अब elephants की जो trunk होती है वो कैसी होती है? Elephant की trunk is a very strong one. So similarly is this exercise will make your arms look having strengthened. तो आपको soften नहीं लगेगी ये, जैसे it is not like a softened, just like a softened thing. It becomes not even hardened, but it will be strengthened, right? अच्छा, किसी का question? Okay. Having the same elbow movement, this is something else. I can also take it, which can be a variation for the elbow. Okay, elbow के लिए variation में ये होगा. This is the सूक्ष्म व्यायाम कपोनी शक्ति विकास का. इस पे क्या रहेगा आप देखेंगे अपने, again fist clenched, thumbs tucked in, having the positioning like this, and here these particular fists are shown as this, not like this. तो ये बाहर की साइड में आपकी जो फिस्ट हैं ऐसे शोड होंगी, और आपके जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल आपके लेग्स के पैरेलल और बिल्कुल साइड में रहेंगे, रेज्ड अप नहीं होंगे, साइड में. और हैविंग लेंथेंड एंड स्ट्रेटेंड, आपने straight, you have to stand straight and then have the fists with the thumbs tucked in, दोनों feet together. Now exercise क्या होगी? Raise your clenched fists forward to the level of the shoulder. Again you're raising your fists again like this to the level of the shoulders and holding the upper arm stiff. अपने upper arm को stiff रखना है. जो movement है वो सिर्फ elbow के through, forearm के through हो रहा है, ठीक है. And then again bringing it down to the original level like this. Similarly, again with the bending of the elbow, again taking your fist upwards and then downwards again. But upper arm को बिल्कुल stiff रखना है. So reverting the original position, तो आपका ये जो again when you are taking this movement, breathing normally रहेगा. You can begin with the 25 times. The number of counts can be 25 times that you can do it to do these particular movements. Okay. Keep your body straightened and your palms open and turned front with the fingers closed together.
आपका जो you can have your feet together. This is another variation, and your palms turned front with the fingers close together. So simply you can just stand straight as it is, body straightened, and have your all the fingers turned towards the, like you can make the movement front side or the other side. इस तरीके से आपकी आर्म्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, इस तरीके से रोटेशन होगा, ट्विस्टिंग ऑफ द आर्म्स होगा, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड. Another exercise could be that repeating this exercise of having the elbows up and down as it is, and the palms must come to the level of the shoulders and then down straight. The elbows should remain stationary and the palms must not touch the shoulders when going up or touch the thighs. So it is just like another having another exercise with some more of the instructions and some more of the things that you can take care of. तो ये सिंपल है. आपके आर्म्स जब भी आप ऐसे मूव करेंगे तो आपने अपनी थाइस को अपने उस पे या शोल्डर्स पे नहीं लगाना है, राइट? ओके, so this was just an add on. So yoga सूक्ष्म व्यायाम भुजावली शक्ति विकास का द लोअर आर्म, अपर आर्म का आपने देखा, तो जिससे कि आपकी एल्बोज का इंस्ट्रक्शंस भी था, जिससे आप एल्बोज की मूवमेंट देख सकें, और इट इज वर्किंग ऑन योर अपर आर्म, जिससे अपर आर्म को स्टिफनेस रखेंगे और अपर आर्म्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा. दिस इज फॉर द लोअर आर्म, भुजावली शक्ति विकास का लोअर आर्म. इसमें क्या आपने देखना है? feet together again, positioning, having the feet together, the body straightened and the arms by the side. Again, when we get ourselves prepared for the movements, हमने सीधा stand straight होना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाना है, दोनों आर्म्स को straighten रखना है, और फिर आपने जब start करना है, having that relaxed way, standing straight in the relaxed way. Okay, begin with your right arm, let it hang relaxed. So it is not hanging relaxed, it is just moving relaxed way. ठीक है, आप अपने राइट आर्म से शुरू कर सकते हैं और अपने राइट आर्म को ऊपर की ओर लेके जाएंगे अपने हेड से ऊपर. ठीक है, अब इसमें क्या फिस्ट बनाई है? हैव वी क्लेंच्ड द फिस्ट? नो, दोनों पाम्स की जो फिंगर्स हैं वो इस तरीके से रहेंगे. ओके, इट इज नॉट लाइक दिस, it has to be like this. Okay, so let your arms go upwards towards the above the head and raise it sideways above your head with the palm outward. तो आपका palm जो है outward रहेगा. It is not like this. It doesn't go like this, but it is like this. जो outer side of the palm है वो आपके बाहर की ओर होगा, जो inner side है वो आपके face की तरफ होगा. Just as we normally हम जैसे hands raise कर रहे हैं. ठीक है, bring it down in the same manner. जैसे कि आप ऊपर की ओर लेके जाएंगे ऐसे ही आप नीचे की ओर लेके आएंगे. ठीक है, now the palm must be open, sorry, with the fingers together. हाँ, palms must be open with the fingers together. So simply it is having the movement of your arms up and down. ठीक है, now same way you repeat this at the left arm as well. ठीक है, another exercise. Now bring both the arms into action. Both should go up and come down together, but the arms should not touch the head, or should not touch, the hands does not touch each other. You're not having the hands like upside, having both of the hands touched together like this up above the head. Shouldn't be like that. Both the arms without touching the head, going up above the head and taking both the arms down without touching your thighs or at your legs. तो इस तरीके से अपने पाम्स का भी आपने फोकस रखना है, आपके आर्म्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है, अपने आर्म्स को कैसे ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं और नीचे की ओर लेके जा रहे हैं. Again, these can be having the repetitions of 25 times. The benefits will be that it will have the help of strengthening your arms. आपके आर्म्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, आपकी आर्म्स में जितना भी अगर वीक आर्म्स होती हैं वो बेटर हो जाती हैं. ठीक है, नाउ इट इज अबाउट द होल आर्म. सो योगा सूक्ष्म व्यायाम पूर्ण भुजा शक्ति विकास का. ठीक है, पूर्ण भुजा मीन्स द होल आर्म. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट इट, होल आर्म का मतलब ये हुआ कि आपको मूवमेंट पूरा रखना है. अब मूवमेंट अगर आप पूरा रखेंगे, अगेन हाउ विल बी बोथ द फीट टुगेदर. ठीक है, अपने दोनों फीट को इस तरीके से जैसे आपने पहले भी देखा वैसे ही रखेंगे, बॉडी कंप्लीटली स्ट्रेटेंड. ठीक है, द हैंड्स क्लिंच इनटू द फिस्ट विद द थंब टक्ड इन.
सिमिलरली लाइक दिस। एक्सरसाइज क्या रहेगी? इनहेलिंग थ्रू द नोज एंड होल्ड योर ब्रेथ, एक्सेल, and while you are exhaling, again when you inhale you take your swing your arms forward, right arm forward and backward in the circle। ठीक है, आप मूवमेंट इस तरीके से करेंगे कि आपका फॉरवर्ड से बैकवर्ड की ओर में जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड ले रहे हैं आप, बैकवर्ड ले रहे हैं, इन अ सर्कल, सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। ठीक है, तो या तो आप स्टार्ट बैकवर्ड से फॉरवर्ड कर सकते हैं या फॉरवर्ड से बैकवर्ड कर सकते हैं, ये भी एक अलग वेरिएशन हो सकता है। सो राइट आर्म फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन अ सर्कल एज टाइम्स, एज मच मेनी टाइम्स एज यू कैन। And when you cannot hold your breath any longer, stop with your arm bent at the elbow and breathe out forcefully without thrusting your arm forward at the shoulder level। तो आपने जब ब्रीद इन किया, आप अपने आर्म्स को रेज्ड अप करते हैं। जब आप ब्रीद आउट करेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, जैसे ही आप अपने आर्म्स को मूव कर रहे हैं और जैसे ही आप ब्रीद आउट करेंगे, आपने अपनी ब्रेथ को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। The moment you are taking the movement of your arms, okay, it should not be that your breathing should stop। breathing को exhale करना है as you are bending your arm and taking the breathing out forcefully। so having the arm, जैसे ही आप अपने आर्म को शोल्डर लेवल पे लाने लगते हैं वैसे वैसे ग्रेजुअली आपने एक्सेल करना है, और जैसे ही आपने हैंड्स को नीचे की ओर लेके जाएंगे कंप्लीट एक्सेलेशन करना है, राइट। Now in the B, the what we are having it in the another exercise or the variation, that is repeat the exercise, repeating the exercise A in reverse and swinging the arm backward and then forward। ठीक है, सिमिलरली रिपीटिंग, जैसे आपने पहले फॉरवर्ड से बैकवर्ड किया, अब आप बैकवर्ड से फॉरवर्ड ले सकते हैं। अगेन दैट विल बी मूविंग इन द सर्कल। नेक्स्ट इज नाउ रिपीट द एक्सरसाइज। अब आप रिपीट भी कर सकते हैं एक्सरसाइज विद द लेफ्ट आर्म और the right arm, that is another way। repeat the exercise B of having the reverse movement, okay, uh, with the left arm or the right arm। that is another way that you are having your another focus। नहीं मानसी जी, ऐसे नहीं है जैसे आप ऐसे क्रिस क्रॉस कर रहे हो ना, it's not like this। have to stand straight and have the movement of your arms up and down, okay। so in this way, and having the same exercise, set of the exercise tone up the nerves, the arms, hands, and becomes more sharply। the entire length of the arms become stronger। जितना ज्यादा आपके आर्म्स की आप ऐसे मूवमेंट करेंगे, आपने फिस्ट पर वर्क किया, तो it becomes bettered in a way that it tones up your muscles toned up होने लग जाती हैं। ठीक है, so like that। next, after having the Bhujavali Shakti Vikasaka, Purna Bhuja Shakti Vikasaka, next is the trunk movement or the Kati Shakti Vikasaka। ठीक है, trunk movement में we'll be seeing that how you are able to move the upper side, right behind, just beneath your neck and your abdomen। So how many movements can be done? The movements can be like twisting from the side, okay, so is the trunk movement is Kati Shakti Vikasaka। Okay, ये हो गया फिंगर्स का अंगुली शक्ति विकासका। ठीक है, स्थला शक्ति विकासका चेस्ट, उधारा शक्ति विकासका एब्डोमेन,
Now this is the Kati Shakti Vikasaka, which is for the backbone. ठीक है, so yoga सूक्ष्म व्यायाम कटी शक्ति विकास का 1, which is for the backbone. अब आप ऐसे इस इमेज में देख सकते हैं, इमेज में क्या है, आपने दोनों फीट देखे हुए हैं, अगेन टक्ड टुगेदर, प्लेस टुगेदर, एंड ये आप एंगल देखिए कि किस तरीके से आपकी बॉडी में जो ऐसा कर्व है वैसा आ रहा है. ठीक है, तो इसमें पहले पोजिशनिंग क्या रहेगी, विद योर फीट टुगेदर, बैक स्ट्रेटन, क्लेंच योर राइट हैंड टू फॉर्म अ फिस्ट विद द थंब टक्ड इन. सिमिलरली इस तरीके से फिस्ट बनाएंगे राइट हैंड का, और अपने लेफ्ट हैंड से अपनी राइट रिस्ट को होल्ड करेंगे लाइक दिस एट द बैक. ठीक है, राइट हैंड विद अ क्लेंच फिस्ट, लेफ्ट hand to hold the right wrist. Okay, so while you are taking a holding like this at the back, so try to have breathe thoroughly through the nose and while bending backward as far as you can. तो जब आपने अपने फीट को इस तरीके से पहले रखा, तो पहले, अब इसमें ये मेंशन नहीं है, अगेन अगर आप नेक को पीछे की ओर लेके जाएंगे और बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंड करेंगे, तो अगेन विद अ जर्क इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एट द नेक एंड द बैक. तो धीरे से आप जब आप बैकवर्ड बेंड मूवमेंट करेंगे, तो हमेशा पहले अब्डोमेन को अपना खींच के रखेंगे. ठीक है, अब्डोमेन को खींच के रखेंगे और स्ट्रेटन करेंगे जितना हो सकता है, ब्रीदिंग करेंगे, एंड धीरे धीरे से अपने एब्डोमेन की तरफ स्ट्रेच होगा, फिर आपकी चेस्ट की तरफ स्ट्रेच होगा, और फिर बैक की तरफ स्ट्रेच होगा, फिर आपका नेक पीछे जाएगा. बट मेकिंग श्योर कि आप अगर जो ये सपोर्ट दे रहे हैं अपने इस हैंड से, अपने फिस्ट से सपोर्ट दे रहे हैं अपने बैक को, और जो एल्बोज है उसकी पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स की पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए, दैट द शोल्डर्स शुड नॉट बी मूविंग in a different way. The shoulders should be positioned as it is. ठीक है, नेक जो होगा जैसे ही पीछे की ओर जाएगा, आप अपने नेक को भी पीछे की ओर लेके जाके रिलैक्स करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि some people feel that when they are doing this exercise, उनको ना एक हेड में वाइब्रेशन होने लग जाती है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, आई विल नॉट से दैट, एक ना एक अलग सा एक वो होता है दैट अगर आपके शरीर में जान नहीं है, शरीर में अगर जान नहीं होगी और अगर आप ऐसे मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड, एंड देन व्हाट विल हैपन, यू विल हंगर फॉर दैट, मुझे अब इसमें से मतलब ये, आई विल नॉट बी एबल टू पोजिशन इट सेल्फ एंड आई हैव टू go back. So what will happen? Sometimes any headache can happen, any dizziness can happen, or sometimes it is like that you will feel like that that maintenance of that posture is not happening. So in that way, proper way से होना जरूरी है. जब आप इनहेल करेंगे तो पूरा बैकवर्ड बेंड मूव करेंगे, मेंटेन द पोस्चर फॉर फ्यू मोमेंट्स. अब इनहेल करके क्या होगा, जब आप इनहेल करेंगे और इनहेलिंग होल्डेड रहेगी, उस दौरान में आपका एब्डोमेन तक, आपकी इनहेलिंग एब्डोमेन तक जाएगी. ठीक है, आप उसके बाद में जब आप फॉरवर्ड बेंड मूव करेंगे, तो फॉरवर्ड बेंड में आप एक्सेल करेंगे. ठीक है, देन ट्राई टू टच योर नीज विद योर हेड. अब जैसे ही आप नीचे की ओर जाएंगे फॉरवर्ड में, तो एक और वेरिएशन ये होगा कि आप अपना हेड जो है अपने नीज से टच करेंगे. रिपीट दिस ऑपरेशन सेवरल टाइम्स. ओके, नाउ 5 times to begin with. You can start with 5 times, and similarly this can this can be very beneficial in the way that it helps your flexibility of your back. The backbone gets flexible. ठीक है, another variation, yoga सूक्ष्म व्यायाम कटी शक्ति विकासका 2, which is for again the backbone. ठीक है, इस पे क्या रहेगा, आपने देखा हुआ है कि with your legs stretched apart as far as possible, जितने भी आपके लेग का स्ट्रेचिंग होगी वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फीट दोनों जो है फ्लोर पे बिल्कुल लाइक on the floor it is completely placed. Okay, without taking your heels up or something like that, you're taking both the feet like this wide apart, and similarly arms on the hips, keeping the fingers to the rear. अब आर्म्स आपने जो ऐसे रखे हैं, आपने कुछ क्लेंचिंग ऑफ फिस्ट्स नहीं किया या होल्डिंग ऑफ हैंड नहीं किया, आप अपने दोनों पाम्स को इस तरीके से साइड पे रखेंगे. ठीक है, now fingers to the rear means you are having your thumb in the front. थंब को अपने फ्रंट में रखेंगे और पीछे से सपोर्ट देंगे अपने बैक साइड से चारों फिंगर्स का. ठीक है, एक्सरसाइज कैसे होएगी, इनहेलिंग बैक बेंड फ्रॉम द वेस्ट एज फार एज यू गो.
तो अगेन बैकवर्ड बेंडिंग होगा जितना आप पीछे की ओर लेके जा सकेंगे, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एब्डोमेन, देन द चेस्ट एंड देन योर नेक. So as far as you will maintain this posture for some time while you are inhaling, as far as you have inhaled, इस posture में maintain रखेंगे. जैसे ही exhale करना होगा तो forward bend move करेंगे. ठीक है? Now, if you make a forward bending, touch the ground with your head. So the crown of the head goes to the ground and touching your head to the ground. Exhale gradually and 5 times to begin with. आप 5 times इसमें इस पर्टिकुलर बैकबोन की आप मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगेन द थर्ड वेरिएशन. फर्स्ट वन was with the feet together, another with the feet wide apart. Now Sukshma Vyayam Kati Shakti Vikasaka 3, the backbone. For the backbone, this is again, you're not clenching the fists, but your both the palms are placed like this at the side. Arms straightened, shoulders fixed, okay, having the elbows straightened, and trying to see that you are not touching the legs with your palms. So positioning क्या है? With your feet together, stand straight. Exercise क्या रहेगी? You inhale and make the back bend without any jerk. It's okay that you, without any jerk, you first stretch your abdomen, then take your chest, and then take your neck back and make the forward and make the back bend. Okay. So as you inhale and hold it, hold your inhalation and hold this posture. After that, when you exhale, make the forward bend with a proper way that you are trying to touch your knees to the head. And then similarly, making sure that your hand do not touch the thighs or the knees. Okay. The fourth variation, which is the Yoga Sukshma Vyayam Kati Shakti Vikasaka 4, having both the arms straightened and both the arms are parallel to the floor with your feet together and standing straight. Now you're having the arms stretched out sideways. Exercise kya hai? That with your arms spread out, bend the trunk to your left as far as you can. अपने trunk को आप अपने लेफ्ट की तरफ में बेंड करते हैं and return slowly to the normal position. ठीक है? So it is like you make the bending towards the one side, having the arms like this, and you make a bend towards the one side, okay, with the arms spread out, and then bend towards your right, and similarly you make the right bending. Repeat this 5 times, to the right, coming to the center, then again coming to the left, coming to the center. While doing this exercise, particular care should be taken to see that your arms do not move up and down. अब जैसे आपने आर्म्स को स्ट्रेटन किया है, इस तरीके से अप एंड डाउन मूव नहीं होने चाहिए. इट शुड बी कंप्लीटली स्ट्रेटन्ड, एंड देन यू मूव द राइट, कम टू द नॉर्मल, देन टू द लेफ्ट, कम टू द नॉर्मल. ओके. सो एंड दैट द ट्रंक डज नॉट बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. आप अपनी साइड वेज मूव कर रहे हैं ट्रंक को, एंड नॉट लाइक दिस. ओके. And at the same time, while bending to the right or the left, you must stretch so that the hands touch the calf. And at the same time, while bending, so आपके जो भी hands हैं, वो आपके calf को, like you're able to have your one arm touching to the calf. आप थोड़ा सा ऐसे bend होंगे तो आपके hand ultimately आपके calf को touch करेंगे जब आप bend करेंगे. So you're bending. Because I'm sitting, I will not be able to show. When you bend, it is like when you move, you try to touch your hand to the ground, na? So similarly, when you move towards the right and come to the original, without making the movement of your arms up and down, you keep your arms straightened. Try to take, if it's the right bend, trying to touch your hand towards the right calf and come back. Trying to touch towards the left calf and come back. Okay. So repeat this exercise with your feet 2 feet apart. Also, that is another variation, simpler one. जैसे आपने पहले वाइड लेग्स का देखा था, इसमें भी वाइड लेग्स में आप रिपीट कर सकते हैं. अगेन हैविंग द 5 times. ओके. नाउ इज द योगा सूक्ष्म व्यायाम कटी शक्ति विकासका 5. व्हाट इज इट? हैविंग बोथ ऑफ द फीट वाइड अपार्ट. ठीक है. अब इसमें क्या है? एक्सरसाइज क्या होगी? व्हाइल यू इनहेल, quickly swing the trunk and the outstretched arms to describe a semicircle to the right and exhale. तो ये इस इमेज में राइट साइड है. तो जैसे ही इनहेल किया हुआ है, इनहेल करते हुए अपनी ट्रंक को ट्विस्ट किया है.
क्योंकि अब आपने पीछे की ओर लेके जाना है, आर्म्स को पीछे की ओर लेके जाना है टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड आर्म्स से सेमी सर्कल बनाया है। मूवमेंट इस तरीके से आर्म्स की है कि एक सेमी सर्कल बन रहा है। रोटेशन कंप्लीटली नहीं है जैसे आपने सर्कुलर रोटेशन साइडवेज में किया था, इसमें आर्म्स का मूवमेंट है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो having this way that outstretched arms, you have to make it towards the right side, और जैसे ही आपके आर्म्स फिक्स हो जाते हैं with this, you exhale completely, making sure that you are having the twist at this side। अब आप देख रहे हैं इसमें अलाइनमेंट कैसा है। अलाइनमेंट में आप देखेंगे कि वो दोनों लेग्स जो हैं, it is fixed in certain way which is not twisting, it is only the twisting that has been made here in the upper body। ठीक है, now repeat this process, and this time exhaling with the trunk turn to the left। इसी तरीके से आप लेफ्ट और भी रिपीट कर सकते हैं, and try to do it for 10 times at the right and 10 times at the left। Now the 5 exercises that for the back make it supple and symmetrical। जब आप दोनों तरफ से इक्वल काउंट्स रखेंगे तो वो आपका सिमेट्रिकल रहेगा। अगर आपने कुछ काउंट्स एक तरफ में किए, कम किए, और कुछ काउंट्स एक तरफ में ज्यादा किए, तो वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। ओके, रेगुलर प्रैक्टिसेस रिमूव्स ऑल द माइनर डिफॉर्मिटीज ऑफ द बैक। स्टिफनेस ऑफ द बैक रहती है, मसल्स जितने भी हैं बैक के उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, या आप ऐसा कांस्टेंट पेन रहता है बैक में, लोअर बैक में, अपर बैक में, ठीक है, हंच रहता है बैक में। सो एनी ऑफ सच डिफॉर्मिटीज विल बी ऑल्सो with the regular practice it removes। Men and women under 25 can add to their height, okay, while those between 25 and 30 will also find themselves taller when they started। so इसमें एक heightened way है, you have to elongate yourself, lengthen yourself, कि आपकी बैक ज्यादा से ज्यादा lengthened हो, and this way it will be a better exercise to their according to their own height। तो जितने भी 25 के अबव जितनी भी उनकी हाइट है, उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली ये एक अच्छा बैक मूवमेंट है, बैक बोन मूवमेंट है। इट इज अ बोन फॉर द शॉर्ट पर्सन। तो जितने छोटे हाइट के लोग हैं उनके लिए ये थोड़ा सा काइंड ऑफ एक डिसएडवांटेजेस है, मतलब इट इज नॉट दैट गुड अप टू दैट लेवल। These exercises are especially good for strengthening the back, and artists, actors, actresses will find them of a great help, right? Now, a short pause for this exercise will add several inches to the chest and take away many more form of a flabbiness at the side। You find that the flabbiness अगर कुछ होती है तो वो आप जब ट्विस्टिंग करते हैं साइड में, वो flabbiness निकलती है और वो रिमूव होती है। Chest expansion होता है because when you twist, if you clench your fist like this and you try to twist, it will affect your shoulders, and similarly that will not be the proper alignment। So there will be the chest elongation, the chest expansion will be there, flabbiness at the sides of the stomach will be removed, and the back will be also bettered। Now with the regular practice it will make the body symmetrical and stronger। तो आपकी जो बॉडी की सिमेट्री है, टोनिंग है, वो बेटर होने लग जाती है और स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर ट्रंक मूवमेंट और द कटी शक्ति विकासक। नेक्स्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द नी मूवमेंट विच इज द जानु शक्ति विकासका। ठीक है, इन द नी मूवमेंट, so it's only, there are various things, the thighs are also being taken, the upper legs। now if we talk about the knees, it is like the yoga Sushma Vyayam Janu Shakti Vikasaka, which is the knee move। तो इसमें सिर्फ एक ही डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आप और भी टेक्स्ट में देखेंगे, कुछ और टेक्स्ट में आपको और भी शायद मूवमेंट मिल जाएंगी, सो विद वेरियस वेरिएशंस। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर दिस थिंग, दैट just it is a very simplified way of having the Janu Shakti Vikasa or the knee movement। so having your feet together as you stand straight, so making yourself completely heightened at one line, okay, not having a hunch at the back, it is just one line, so you yourself is perpendicular to the ground। now exercises that you raise your foot forward with a little upside, you're taking your knee, आपने अपने एक पैर पे बैलेंस करते हुए दूसरे पैर को ऊपर की ओर उठाया है। इट इज अबाउट कितना होगा, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज तक आप ऊपर की ओर उठा सकते हैं, और योर नी शुड बी स्ट्रेटन। ठीक है,
Repeat while keeping the upper part of your body in the same straightened way. अपनी upper body को straighten ही रखना है. And after doing this exercise with one leg, repeat it with the other. So if you have taken your right leg upside and having your knee straightened and balancing on the left foot, and your left knee straightened, you as you inhale, you raise your leg up, and when you exhale, you put your foot down. Similarly, as you inhale, what happens? You try to balance on this feet, and then as you inhale, raise your foot up, hold, and as you exhale, keep your foot down. Now, while taking your leg back, the heel must not touch the buttocks. Okay, it should not be like that. It is that just you are having your original way that you are taking it originally. तो इस तरीके से जो movement है आपके legs का back side पे नहीं जाएगा, ये forward movement and then to the original. ठीक है? 10 times to begin with, and this exercise is good for rheumatic condition of the knee as it improves the circulation of the blood in the region, and it is if particularly efficacious for football players. ठीक है? फुटबॉल प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, और ये जितनी प्रॉपर सर्कुलेशन रहती है नीज के लिए, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर करती है. कोई भी नीज की ऐसी कंडीशन होती है जैसे देयर इज मोर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टिलेजेस दैट टेक्स प्लेस, इट गेट्स बेटर. ड्रामेटिक कंडीशन जितने भी होते हैं नीज के, वो बेटर होने लग जाते हैं. ठीक है? सो ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर मूवमेंट्स. एनी क्वेश्चंस एनीवन? क्लियर ना? आपको सभी इमेजेस दिखी ना? Yes, ma'am. और बार I will able to show it to you again. नहीं मैम, ऑल क्लियर. ठीक है ना? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. All right. So tomorrow I will be covering the topic of asanas. ठीक है? Let me share my screen for uh, showing you the syllabus as well. So it will be the yoga asana technique, contraindications, benefits, having the standing posture, sitting posture, prone posture and the spine posture. तो आपके syllabus के accordingly बहुत ही limited हैं, आपके asanas बहुत limited हैं. Although asanas can be more when we categorize into the sitting, standing, prone and supine. So we'll be discussing all of it which is being mentioned here with the technique, contraindications and benefits. Okay. All right. राइट मैम. So with this, to close the session, let us sit back comfortably. Before I end the session with a closing prayer, any question? Deepshikha ji, आपने आज join किया है after a very long time. Please unmute. मैम मैं कल भी आई थी, 2-3 दिन से मैं कर रही हूँ, पहले नहीं किया था, अभी मैं Okay. कर रही हूँ मैम. Okay. मैम मेरा एक सवाल था. हाँ. हाँ, तो मेरी बेटी का वो मतलब वो 9th क्लास में है, तो वो जो बैग लेके जाती है ना, उसके मतलब वेट के लिए उसके मतलब कंधे पे दर्द है, तो उसके लिए कुछ मैम ऐसा ये सब आपने जो आज बताया था ना, कंधे के लिए जो सब प्रोटेक्ट करना हैंड के, ये सब करने से वो ठीक हो जाएगी क्या? तो क्या ये मतलब कंसिस्टेंट पेन है, बहुत टाइम से पेन है? नहीं नहीं नहीं, अभी मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, वो सब 20 डेज हुआ है शायद. ओके. सी ये तो आप जैसे एक तो प्रॉपर तरीके से जैसे अलाइनमेंट रहता है या बैठने का तरीका रहता है या जैसे भी उनकी पोजीशन रहते हैं, आप उनको बैठने का उठने का उसमें ध्यान दें कि एक प्रॉपर अवेयरनेस हो. और सिमिलरली जैसे कंधों की भी एक्सरसाइजेस हैं, वो भी आप करवा सकते हो.
अगर ये आप जैसे बता रहे हो स्कूल बैग्स अगर बहुत हैवियर होते हैं, बहुत हैवी स्कूल बैग्स होते हैं, तो उस वजह से भी ठंड उतने हो, तो उस हिसाब से भी आप वेट जो है कम कर सकते हैं बैक पे, मतलब अगर उस तरीके से भी कुछ हेल्प हो जाए तो। और बाकी शोल्डर मूवमेंट्स जैसे इसमें बताया गया है, तो उस वो भी हेल्प कर। हाँ मैम। ओके, थैंक यू। अच्छा, डज शी यूज एनी मोबाइल फोन्स? मोबाइल फोन का आईज का बहुत ज्यादा रहता है क्या, स्क्रीन टाइम ज्यादा रहता है? हाँ लगभग तो मैम आजकल तो क्लास वगैरह ऑनलाइन में ही होता है ना, तो मतलब उसके लिए जो कोचिंग वगैरह है वो भी ऑनलाइन ही होता है लगभग, तो ऐसा होता है। ओके। सो ज्यादातर पता है क्या होता है कि आप कितनी भी अगर एक्सरसाइज कराओ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बैठने का, उठने का, चलने का जो अलाइनमेंट है वो भी अगर सही रहे, ज्यादातर स्क्रीन टाइम में अगर ये होता है, इनफैक्ट अगर मैं अपनी ही बात करूं, सो अगर मैं अगर कॉन्स्टेंटली बैठी हुई हूँ, स्क्रीन एक्सपोजर है, सो आई माइट हैव यू नो सम डिफॉर्मिटीज, वो अपने आप ही शोल्डर पे आ जाएगी या बैक पे आ जाएगी। तो सिमिलरली अगर आप देखें, ज्यादातर अगर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, एक तो आईज का भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है स्क्रीन से, और वी कैन नॉट हेल्प इट। अगर कोई भी आपकी लाइक स्क्रीन एक्सपोजर होता है, उस पे स्क्रीन टाइम अगर बढ़ता भी है ज्यादा, तो उसके साथ साथ में रिलैक्सेटिव आसनास या एक रिलैक्सेशन का भी टाइम जरूरी है। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है, एंड एट द टाइम ऑफ स्लीप इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑफ विद एनी ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है? अगर आपकी whenever if you are having that sleep time as well, how is the way that you are able to find yourself that you are able to lie down in a proper way, तो वो भी बहुत मैटर करता है। Okay, it is not only that you correct yourself in strengthening, it is also to correct yourself in relaxation, it is also to correct the habits while lying down as well, it is to correct your habits with how you are able to be exposed, how you are exposed with so many screen times, and what is the way with which you are carrying yourself, carrying as in your bodily awareness. Okay. ओके मैम, थैंक यू। And Deepshikha ji, how many students are there when she's taking the class online? How many students are there when she's taking the classes online? Please unmute. मैम आई थिंक 12। Okay. All right. Okay. So is it like whenever she's taking the classes, she's eating at that time as well? हाँ मैम। Or she has her, her meal before taking the class? फटाफट से तो खाना नहीं होता ना, बहुत जल्दी जल्दी खाना, क्या मैम? ऐसा होता है? हाँ होता है मैम। सो अपने आप मतलब अगर बहुत ध्यान देके अगर खाना खाया जाए, बिना किसी at the time she's taking the class, so having the proper way whenever she's sitting and have her meal before having the class is really important. कभी भी अगर कोई आपकी क्लास हो रही है उस टाइम पे आप ना खाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। even if you see in the home as well, we get so many habits। अच्छा, ये भी कोई भी अगर क्लासेस हैं, ये किड्स योगा की नहीं है, any of the thing is not related to kids yoga here, okay? I am mentioning that really specifically. You have any of the questions, I am answering it, but since this is a yoga volunteers course batch, so it is all about ऑलराइट। not for kids। ठीक है?
I'm mentioning that again. All right. So, before I end up the session, let me take your attendance. Can I take your attendance, everyone? क्या मैं आप सभी की attendance ले सकती हूँ? Yes, ma'am. All right. Just all right. So I've taken your attendance, everyone. Hi, Neelam ji, you have taken your camera on just now. आपने अभी अपना कैमरा ऑन किया. नीलेश जी ने भी बस 1 सेकंड के लिए अपना कैमरा ऑन किया. मैम सिर्फ मेरा फुल टाइम होता है. हाँ, yes. Okay, आज Jyotna ji भी probably she is in the office, so that's why she has not turned her camera on. That is okay. नीलम जी आप प्लीज आई थिंक मैंने आपको देखा नहीं है. आप कभी कभी क्लास में आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो आप कोशिश करें कि मतलब मुझे पता नहीं चलता है कि आप क्लास में हैं एक्चुअली. प्लीज अनम्यूट. हाँ मैम 2 सेशन मिस हुए थे मेरे. हाँ अनवांटेड सिचुएशन आ गई थी तो ज्वाइन नहीं कर पाई थी. अदरवाइज मैं ज्वाइन करती हूँ मैम रेगुलर. ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज. मैं कोशिश करूंगी कि अभी तक जितने भी सेशंस लिए हैं आप सभी ने अगर जितने भी ईमेल आईडीज मुझे प्रोवाइड किए हैं तो मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दे सकूं. ठीक है, आज आज ही मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकूं तो आई विल ट्राई इट. ओके ओके. All right, so let's sit back comfortably and join the palms together to the center. Gently close the eyes. Be relaxed and breathe in deeply. Breathe out. Again, breathe in deeply. And breathe out. Let's begin with the Om chanting, followed with a closing prayer. ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर से अपना क्लास को क्लोज करेंगे. ओके, सेशन एंड करेंगे. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. Take your palms together and generate heat. Slowly and gently bring your palms to your eyes. जैसे अपनी हथेलियों को अपने माथे से लगाएंगे, अपनी आईज से लगाएंगे, अपने पूरे फेस से लगाएंगे. And give the warmth of your palms to your face. Okay, अपने palms की warmth देंगे अपने पूरे face. Take the palms in front of you. Very slowly and gently open your eyes and look at your palms with a gentle smile on. एक अच्छी सी मुस्कुराहट रखते हुए अपने
आईज को ओपन करेंगे और अपनी हथेलियों की ओर देखेंगे. All right, everyone. Thank you. We'll meet tomorrow. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. All right.